Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, आप लोगों की रिक्वेस्ट से मैं आज लेके आई हूँ न्यूजीलैंड आरएन की वीडियो। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैम जो वीडियोस हैं मोस्टली यूट्यूब के ऊपर वो दूसरी लैंग्वेज में है, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, तो क्या प्लीज़ आप कुछ गाइड कर सकते हैं न्यूजीलैंड आरएन के बारे में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूजीलैंड एक कंट्री है जिसके अंदर अगर आपको आरएन बनना है तो आपको एग्जाम्स तो देने ही पड़ते हैं। पहला जो एग्जाम आपको देना पड़ता है दैट विल बी योर OENT। सेकेंड एग्जाम जो आपको देना पड़ता है दैट विल बी योर CBNT। और थर्ड एग्जाम जो आपको देना होता है दैट विल बी योर OSCNE, योर ऑस्की एग्जाम। OET एग्जाम आपका एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है बिकॉज उस कंट्री के अंदर बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश है, इसीलिए उस कंट्री को आपको ये प्रूव करना होता है दैट यस यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो आपको OET का जो एग्जाम है उस केस में देना होता है। क्या कोई और इंग्लिश के टेस्ट है? यस, इस केस में आप आइल्स भी दे सकते हो, OET भी दे सकते हैं। नंबर 2, वी हैव CBT एग्जाम। CBT इज पर्टिकुलरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर आपको दो पार्ट आते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन दोनों पार्ट्स को पास करने के बाद ही आपको ऑस्की की एलिजिबिलिटी मिलेगी। सो CBT में पर्टिकुलरली जो सिलेबस आता है वो पर्टिकुलरली आपका नर्सिंग बेस्ड ही होता है। अगर आपकी कमांड सॉन्डर्स में, लिपनकॉट में अच्छी है तो आप इस एग्जाम को पास इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है और आपको लगता है कि आपको मेहनत की ज़रूरत है, तब आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, वेयर वी आर गोइंग टू टीच यू हाउ टू क्लियर दी CBT एग्जाम। इसके अंदर पर्टिकुलरली हम आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑफलाइन, ऑनलाइन, पर्टिकुलरली ऑनलाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एक ड्यूरेशन देते हैं 15 दिन की, आपको गायनी का सिलेबस खत्म करना है, देन आफ्टर मेडिकल सर्जिकल का सिलेबस खत्म करना है, फिर आपको लाइव आकर फार्मा पढ़ाई जाती है बिकॉज फार्मा का तो एक प्रॉपर सेगमेंट होता है, सेक्शन होता है, उस सेक्शन को पास करना होता है। सो CBT इज योर सेकेंड एग्जाम विच इज कंप्लीटली नर्सिंग बेस्ड। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नर्सिंग पढ़कर इस पेपर को क्लियर किया जाता है। तीसरा जो पेपर होता है दैट इज न्यूजीलैंड ऑस्की। न्यूजीलैंड ऑस्की इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन ऑस्की, वेरी डिफरेंट। इस एग्जाम को आपको देने के लिए न्यूजीलैंड में जाना होता है और वहां पर जाकर आप इस एग्जाम को देते हैं। ये एग्जाम पर्टिकुलरली ऑफलाइन तो है ही है, एक स्टिमुलेशन लैब में दिया जाता है। इस एग्जाम में जो स्टेशन आपको देखने को मिलते हैं दैट विल बी 10। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ इन चीजों के बारे में। सो ऑस्की is particularly 10 stations. 10 stations। आपको इन 10 में से 10 को पास करना है या 3 को या 4 को या 5 को या 6 को, इसके बारे में कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं है। बिकॉज जब रिजल्ट आता है इस एग्जाम का तो आपको एक शीट मिलती है और आपको क्लियरली मेंशन होता है पास या फेल। कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन से स्टेशन में आपके क्या स्कोर है और कौन से स्टेशन में रिक्वायरमेंट क्या थी और आपने कितनी मीट की है। इसीलिए ये काफी डिफिकल्ट पार्ट होता है, थोड़ा समझना मुश्किल होता है कि अगर हमने फेल किया तो फेल किया कहाँ, और जो कि बहुत दुख भी होगा बिकॉज आपने पूरी मेहनत करी बट आप फेल हो गए और आपको ये पता नहीं चल रहा कि कहाँ गलत करके आई हूँ मैं, ये करके आया हूँ। इसीलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है एंड एग्जाम इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली, अराउंड 3500 न्यूजीलैंड डॉलर्स। सो कहीं ना कहीं एग्जाम एक्सपेंसिव भी होता है और आपको पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर फेल हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि फेल हुए तो हुए कहाँ। अब बात करते हैं 10 स्टेशन के बारे में कि है क्या। पर्टिकुलरली गाइस, हर एक स्टेशन में 2 मिनट हमें सिनेरियो को पढ़ने के लिए मिलते हैं।
8 मिनट हमें सिनेरियो को परफॉर्म करने के लिए मिलते हैं, और फिर उसके बाद अगेन 2 मिनट्स अगला सिनेरियो पढ़ने के लिए, 8 मिनट सिनेरियो परफॉर्म करने के लिए। इस प्रकार से हर एक स्टेशन में आपको लगभग 10 मिनट जो है वो कंज्यूम होते हैं। 2 मिनट सिनेरियो को रीड करना, 8 मिनट्स परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो नॉर्मली जो कन्वर्सेशन होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ आप बात करते हो, वी ऑलवेज टॉक लाइक ठीक है, हो गया, ओके, फाइन, बाय, हेलो, लाइक दिस। बट इन योर OSCE exam, the method of conversation, the communication skills play a crucial role. If you want to pass this exam, you literally need competence in speaking, and moreover also required your practical skills. For example, CPR. CPR is a station which is completely practical station, and this CPR is completely different from your WHO CPR, World Health Organization. Because in WHO, what we follow, we always need to check the pulse for few seconds. But in New Zealand CPR, we never check the pulse, because according to them, they believe checking pulse is wastage of time. Instead, we can initiate the compressions automatically. The pulse will initiate. So why wasting few seconds? Few seconds are also vital. So the country protocols are a bit different, okay? And most importantly, the Indian practice is completely different from New Zealand practice. So if you will think I'm working in very big hospital and NABH accredited, I can pass this exam very easily. That's not true. All the parameters, all the significant important roles of the nurses are different. So you need to, if you want to pass this exam, you literally need to train as a New Zealand RN. Okay. Number two, different stations, different assessment. For example, there will be one station in which they are going to assess your mental status and how you're going to deal a mentally ill patient, how you're going to deal with the anxious patient, how you're going to deal with the depressive patient. All these skills are going to assess in your mental health deteriorating patients or mentally healthy patient. Next, for example, you can get one station in which, sorry, in which you will be assessed how you are talking to a Maori culture patient. For example, in India, we have different cultures, we have different castes, right? And as per culture, we talk differently and they perceive the same actions in a different manner. For example, in Sikhism, there are so much rules and regulations, right? Their own belief that usually other people don't believe, or usually they don't follow. For example, South Indians, they have no idea, right, about Sikhism. So, but what we do as a nurse, we don't care whether they are Sikh, whether they are South Indian, whether they are Indians, whether whatever. We treat each and every patient with equality. Same thing going to happen here. They're going to give you one special patient, Maori culture patient, you know, and you have to deal them in a very, very positive way, with dignity, with according to their protocols, according to their cultures, according to their beliefs, and you have to respect them. So they are not going to pass you the station if you are racist, or if you are very, for example, you're not following the rules, you're not respecting others culture, you're not respecting others belief. You will not pass the station because it's going to reflect on your face. So in this station they are going to assess you basically what's the reality of yours, how you gonna deal the patient who are different from your culture. Similarly, in other stations, they're going to assess your medication tricks. How do you know about the five rights? Do you know how to follow the five rights? Such things. And also, they are going to check your basic skill, basic nursing skills, your vital signs. Do you know about vital signs? Do you know how to check the vital signs? If you will check the vital sign, and like wrongly, and you have charted or documented the findings, the fake findings, basically, you're gonna fail the station. If you will tell them a fake reading, fake pulse, fake respiratory rate, you're gonna fail the station. So generally, you should know how to
check the vitals. Other than that, guys, we have other lot of, the total 10 stations, and we also teach you the other station, for example, like urinalysis, BGN assessment, because we don't know when they're going to change the exam. We have no idea. Usually paper is like, almost in majority of time the exam is fixed, but they can change the exam at any time. So we are going to make you, prepare like in a manner that you can pass the exam at any cost. Whether they change the exam doesn't matter. And one more station, which I feel very, very important is SBAR station. How you're going to communicate all the findings of the patient with the another nurse, or with the doctor, or with the physiotherapist, or with the technician, or with the radiologist, like whatever it is. So how you're communicating the data, how you're dealing, how you are, giving the message. For example, हम क्या करते हैं, मैंने कुछ सुना फिर मैंने आगे मैसेज दिया, उसने कुछ सुना फिर उसने कुछ और मैसेज दे दिया. So they are going to judge how, what you listen, and how much you have ability to capture the, the listening skills. So they're going to assess your listening skills, communication skills, everything in your bar station. So guys, if you want to become a RN in New Zealand, you need to clear your OET exam, you need to clear your CBT exam, and at the last you need to clear your OSCE exam. We are going to help you with your CBT and with your OSCE. For OET, we have a lot of other resources, we have a lot of other options, which will help you definitely to pass your exam. You can also do it by yourself, by self-study, because I know a lot of candidates who passed their OET by, by self-study. So you can do that also. But if you need any help, just let us know. CBT exam, that is computer-based test. If your skills are good enough, you can prepare it by yourself. But if you think you are not good enough, or your basics are not that much strong, you can contact us. For OSCE, I think 100% you should contact us, because we are the best one. And one go, you will get your results. No issue with that. And the phone number that you can call on is 919717686983. You can call on this number. Definitely we are going to help you, but please don't call unnecessary. We are only going to talk to you if you have queries related to your New Zealand OSCE, CBT, or OET. Thank you so much guys for watching my video and liking my video. In case if you want like answers of another questions that you have in your mind at the moment, please just write it down in the comment box. And if you want to correct us at any point, please let us know. Thank you so much.